हेलो लोग, गुड मॉर्गन, वी गेट्स। आज के वीडियो हम सीखेंगे कुछ A2 लेवल के वोकैब, स्पेशली नाउन्स। ठीक है, फाइन। तो शुरू करते हैं। और इस सिलसिले में हम A2 लेवल के पूरा जो वोकैब है उसको करेंगे कुछ वीडियोस में, राइट। सो द फर्स्ट वन इज दस गेस्प्रेक। गेस्प्रेक मीन्स क्या होता है? कॉन्वर्जेशन, यानी बातचीत। उनसे गेस्प्रेक wurde unterbrochen। unterbrochen इज, unterbrechen का ये पार्टिसिपल स्वाई है, इसका मतलब होता है इंटरप्ट, डिस्टर्ब हो जाना। ठीक है, सो unter Gespräch wurde unterbrochen means our conversation was interrupt. Wir hatten ein langes Gespräch, das Gespräch, so lang में es लग गया, right? Adjective का लेक्चर आपने देखा होगा। Wir hatten ein langes Gespräch means we had a long conversation, हमारी बातचीत बहुत लंबी थी। Der Kurs means course, so wie lange dauert der Kurs? सो डावर मीन्स टू लास्ट, कोई चीज कितनी लंबी चलती है उस सेंस में यूज होता है डावर। सो वी लॉन्ग डावर देयर कोर्स, हाउ लॉन्ग द कोर्स लास्ट। देयर कोर्स बिगिन am Montag means the course is starting on Monday. Bitte reden Sie nicht während des Kurses. Okay, so please don't talk during the course. Der Satz, die Sätze, or whenever we learn a noun in German language, we also learn the plural form at the same time. That is a rule. ठीक है, ताकि हमको बाद में आगे दिक्कत ना हो। Der Satz, die Sätze, यहाँ पे ये जो है umlaut बन जा रहा है, इसका ध्यान रखो। Bitte bilden Sie Sätze mit diesen Adjektiven means please make sentences with these adjectives. Bitte bilden Sie Sätze mit आ गया तो diesen का diesen हो गया, dative में that is adjective declination, and adjective में लास्ट में en लग गया। ठीक है, फाइन। So we convert diesen Satz ins Englische Übersetzen. How can we translate this sentence into English? ठीक है, so यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की है कि Übersetzen means होता है translate, and when we translate something from one language to other language, so we use ins. Fine, right? So we convert diesen Satz ins Englische Übersetzen. So target language के पहले हम ins लगाते हैं। Können Sie bitte den Satz wiederholen? Can you please repeat the sentence? So wiederholen is repeat. Die Nachricht means news. Nachricht means news and also message. जैसे मान लीजिए आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? नाखरिcht. ठीक है, I'll just type message news. Ich habe eine Nachricht means I have a news. I have a message. Ich lese gern die Nachrichten means I like reading newspaper. ठीक है, the news. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. I have a bad news for you. Schlecht is bad and it is die, so schlechte Nachricht. Die Geschichte, Geschichte का दो मतलब होता है, एक तो स्टोरी, दूसरा हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत सुंदर एग्जांपल देता हूँ आप। जैसे उर्दू में क्या बोलते हैं? तारीख। आज तारीख क्या है? ठीक है, तो आज तारीख है 23 अप्रैल 2024। फाइन। मगर इतिहास के लिए, हिस्ट्री के लिए भी उर्दू में हम तारीख ही बोलते हैं। ठीक है, तारीख से हमें ये सबक मिलता है कि, ठीक है, तारीख ने हमें सिखाया है कि अगर तारीख पढ़े तो आपको पता चलता है कि, तो वहां पे तारीख का मतलब होता है इतिहास। ठीक है, सेम वे Geschichte इन जर्मन मींस हिस्ट्री एंड स्टोरी। Geschichte wiederholt sich मतलब यहाँ पे हिस्ट्री से संबंध है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। एक स्टूडियर गैर Geschichte, फाइन, मतलब आई लाइक स्टडिंग हिस्ट्री। गेन जहां पे लग जाए इसका मतलब ये समझिए कि यू लाइक डूइंग दैट थिंग, इस तरीके से, मतलब ग्लैडली, हैप्पीली, खुशी खुशी। बट इंग्लिश में हम जैसे उसको बोलते हैं, सो वी फॉर्मुलेट इन ए डिफरेंट वे, लाइक ich studiere gern Geschichte means I like studying history. ठीक है, die Geschichte war sehr interessant. ठीक है, the story was very interesting. जैसे मान लीजिए कोई घूमने गया कहीं पे, फिर आने के बाद अपने टूर का स्टोरी सुना रहा है, so in that sense we can say die Geschichte war sehr interessant. Fine. Die Erfahrung. Erfahrung is experience. Plural is Erfahrungen. So ich spreche aus Erfahrung. Aus Erfahrung is like based on your experience, you are saying something. So I'm speaking from my experience, right? Sie hat verschiedene Erfahrungen gemacht. Erfahrung machen is to gain experience. It's like collocation. ठीक है, इस word के साथ क्या लगता है? So Erfahrung के साथ always machen, मतलब to gain experience. She has got so many experiences. Die Gruppe. Gruppe is group.
वेलफेयर ग्रुप गेहोर्स टू। अभी यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, एक तो होता है गेहोरन, हमने किया भी होगा पिछले चैप्टर्स में। गेहोरन मीन्स टू बिलोंग टू, बट गेहोरन सू, यहाँ पे गेहोरन सू है, इसका मतलब ये है कि समथिंग डजंट बिलोंग टू यू फुल्ली, बट इंस्टेड यू आर ए पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। सो एक ग्रुप है, उसके आप सदस्य हैं, उसके आप मेंबर हैं, सो इसमें हम गेहोरन ले लगाएंगे, बल्कि गेहोरन सू लगाएंगे, ठीक है। सो वेलचर ग्रुप गेहोर्स टू, वेलचर इज विच, राइट। और डाटी की वजह से ये ग्रुप है, तो वेलचर का वेलचर बन गया, जैसे डी का डेयर बन जाता है, राइट। सो वेलचर ग्रुप गेहोर्स टू मीन्स टू विच ग्रुप डू यू बिलोंग टू। Warum arbeitet deine Gruppe nicht? Why is your group not working? There is a group named nicht am quiz teil. Suppose there are so many groups that are participating in a quiz, but there is one group which is not taking part. So tile name is separable. That means to take part. So इसलिए tile last में चला गया, right? Der Platz. Der Platz means क्या होता है? Der Platz, die Plätze means seat, space. जैसे bitte nehmen Sie Platz. Bitte nehmen Sie Platz. So it's a kind of ready-made phrase जिसका मतलब होता है please take a seat. जैसे तशरीफ रखिए बोलते हैं उर्दू में, वही चीज है. So bitte nehmen Sie Platz. Gibt es noch einen freien Platz? So gibt es means as gift. That is there are. So gibt es हो गया, पहले लग गया gift means question. So gibt es noch einen freien Platz? Is there still a free seat? Fine. Unoccupied seat. That's it. Diploma. Diploma means Blume is flower. Die alte Dame verkauft Blumen means the old lady sells flowers. ठीक है. Meine Freundin hat mir Blumen geschickt. My friend has sent me flowers. ठीक है. Blumen, flowers, plural. There's sparse. Sparse means fun. Okay. Fine. यहाँ पे एक ध्यान देने की बात यह है, Etwas macht jemandem Spaß, मतलब कोई चीज किसी को आनंद दे रहा है, इस सेंस में इसका जो लिटरल मीनिंग बनता है, ठीक है। सो उसको यूज कैसे करना हमको आना चाहिए, फाइन। यू कैन से ich mache Spaß, नो, यू कैन से दैट मीन्स आपके साथ किसी को मजा आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं बोलने का। एटवस मार्क्स पास, आप कुछ चीज कर रहे हैं तो उसमें आपको मजा आ रहा है, सो सेंटेंस फॉर्मुलेशन कैसे होगा, ठीक है। दस हट में पास के मार्क मीन्स आई एंजॉयड डूइंग दैट, वो काम करके मुझे मजा आया। दस हट में स्पास के मार्क, ठीक है। सो स्पास किसने दिया, दस ने, न कि आपने। दी arbeit macht mir keinen Spaß mehr, keinen Spaß mehr means not anymore, nicht mehr, keinen Spaß mehr. So dear arbeit macht mir keinen Spaß mehr means I don't like that work anymore, in that sense, fine. Now the first sentence जो है इसका, ich mache nur Spaß, यहाँ पे इसका सेंस अलग है, मतलब I'm just joking. Spaß machen means to joke. Ich mache nur Spaß means I'm just joking. Nur का सेंस क्या होता है, only, यहाँ पे I'm just joking, इस सेंस में आएगा। The controller means check, ठीक है, monitoring. Hören Sie die Sitzer zur Controller. Zur Controller is a kind of phrase, इसका मतलब होता है for checking purpose, ठीक है, करेक्शन के लिए, ठीक है। किसी ने कुछ लिख के दिया स्टूडेंट ने, उसके बाद से उसको चेक कर रहे हैं। So hören Sie die Sitzer zur Controller. Fine. Bitte das Passwort noch einmal zur Controller eingeben. ठीक है, verification. So for verification, please give your password once again. Enter your password. Eingeben is to enter. Difana means pan. ठीक है, जो फ्राई पैन होता है उसको। Difana is too high. The pan is too hot. वो इस डेकल डेफाना, डेकल इज लिड, उसका जो कवर होता है, पैन के ऊपर वाला जो लिड होता है उसको बोलते हैं। सो वो इज डेकल डेरफाना। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो डेर आया है क्यों आया है, दैट इज गेनेटिव। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके जरूर देखें। सो डीफाना का गेनेटिव में डेरफाना मीन्स डेकल डेरफाना मीन्स डेकल ऑफ द पैन, मतलब लिड ऑफ द पैन। सो वो वेयर इज द लिड ऑफ द पैन। Hast du Öl in die Pfanne gegeben? तो हैव यू पुट ऑयल इन द पैन, ठीक है। सो जब तेल डालने की बात आए तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं ना, तेल डाल दो, कढ़ाई में तेल डाल दो, राइट, फाइन। पैन में तेल डाल दो, इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, पुट द ऑयल, राइट। जर्मन में कैसे बोलते हैं, गेबन, फाइन। बिtte gib Öl in die Pfanne. Hast du Öl in die Pfanne gegeben? सो इसका ध्यान रखें। डेट ऑफ डिटोफा मीन्स पॉट, कोई भी खाना बनाने वाला बर्तन है उसको पॉट बोलते हैं।
So wer wäscht die Tür vor und die Pfanne? Who is going to wash the pots and the pans? Normalerweise hat ein Topf zwei Griffe. Griffe means plural form griff, that is handle. Pot का handle होता है ना दोनों साइड में. So normalerweise means normally. Normalerweise hat ein Topf zwei Griffe means normally a pot has two handles. ठीक है, अक्सर एक pot के दो handles होते हैं. The Sieb, Sieb is Sieb. So meine Mutter hat ein neues Sieb gekauft. ये जो चाय छानते हैं ना वही चीज है. So meine Mutter hat ein neues Sieb gekauft. My mother has bought a new sieve. ठीक है. The Zwiebel, Zwiebel is onion. ठीक है. Plural is Zwiebeln. N लगाना सिर्फ. So where schneidet die Zwiebel? That's a arduous task. So where schneidet die Zwiebel means who is cutting the onions. Meine Mutter mag keine Zwiebel. ठीक है. My mother don't like onions. ठीक है. Mag क्या है? Mögen. Mögen is to like. Fine. So सिंगुलर में कंजुगेशन mag. Das Gemüse. Gemüse ये क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. Das Gemüse सिंगुलर ही होता है, बट इसका जो सेंस होता है वेजिटेबल प्लूरल में होता है. So vegetables. Mein Onkel verkauft Gemüse means my uncle sells vegetables. ठीक है. वो cows do Gemüse. Where do you buy vegetables? आप सब्जी कहाँ से खरीदते हैं? कहाँ खरीदते हैं? एक ऐसे नुआ फ्रिशन Gemüse. ठीक है. एक ऐसे नुआ फ्रिशन नहीं सॉरी फ्रिशेस. एक ऐसे नुआ फ्रेशेस Gemüse because das Gemüse. So I eat only fresh vegetables. मैं केवल ताजी सब्जियां खाता हूँ. ठीक है. Das Messer knife. Give me a dein Messer. Das Messer is knife चाकू. Give me a dein Messer. Give me your knife. Ich brauche ein Messer. I need a knife. Die Gabel. Gabel is fork. Here sind die Messer, die Gabel und die Löffel. Here are the knives, forks and the spoons. Der Löffel, die Löffel, that is spoon. Die Japaner essen mit Gabel. The Japanese people eat with fork. ठीक है. Die Kartoffel means potato. Die Kartoffel is potato. Kartoffel werden auf der ganzen Welt gegessen means potatoes are eaten throughout the world. यहाँ पे ध्यान दीजिए, this sentence is in passive. ठीक है. Die ganze Welt ist Kartoffel, ये हो गया active. पैसिव में क्या होगा? Kartoffel werden auf der ganzen Welt gegessen. ठीक है. इसका भी लेक्चर पढ़ा हुआ है, जाके देख सकते. Die Arbeit. Arbeit is work. Work not to work, काम करना नहीं बल्कि काम as a noun. जैसे मेरा काम मुझे पसंद नहीं है, तेरा काम बहुत अच्छा है. ठीक है. इस सेंस में नॉट कि मैं काम करता हूँ. So it's not काम करना, उसको क्या बोलते हैं? Arbeiten. Ich arbeite nicht. ठीक है. So er sucht Arbeit means he is searching work. Die Arbeit war schwierig. The work was difficult. Schwierig is difficult. Das Licht. Das Licht is light. And the plural is die Lichter. Wir brauchen mehr Licht. Simple. We need more light. Kannst du bitte das Licht ausmachen? यहाँ पे सबसे जरूरी ध्यान देने की बात यह है. Anmachen and ausmachen. This is specially used in case of light. Ausmachen is to put off light. Light बंद करना, बत्ती बंद करना. Ich mache das Licht an means I am putting on the light. मतलब लाइट जलाना. लाइट जलाने को अनमाखन और लाइट बुझाने को ausmachen. That is again separable. Das Gefühl. Die Gefühle means feeling. Ich habe ein ähnliches Gefühl. Ähnlich is similar. ठीक है. Ähnlich is similar. Das Gefühl so ähnliches. Ich habe ein ähnliches Gefühl. Er hat kein menschliches Gefühl. He has no human feelings. ठीक है. Er hat kein menschliches Gefühl. Kein से negate हो गया. Das ist ein gutes Gefühl. That is a good feeling. Es gibt auch negative Gefühle. There are also negative feelings. Es gibt is, there are. So there are also negative feelings. The Vermutung. Vermutung is guess, assumption. Again as a noun. उसका verb क्या होता है? Vermuten. It vermuted does. ठीक है. So das sind nur Vermutungen. They are just guesses. They are just assumptions. ठीक है. Dieses Ergebnis hat meine Vermutung bestätigt. Bestätigen is to confirm. Right? Fine. So try to understand this sentence. Dieses Ergebnis. Ergebnis is result. आपने कुछ किया,
किसी ने कुछ किया, फिर उसका कुछ रिजल्ट आया. सो dieses Ergebnis मीन्स दिस रिजल्ट hat meine Vermutung bestätigt. ठीक है. सो परफेक्ट में है, लास्ट में चला गया, बट इट्स सो. हैज कंफर्म्ड, दिस रिजल्ट हैज कंफर्म्ड माय assumption या माय गेस. ठीक है. Das Praktikum, die Praktika, internship, training. Ich mache gerade ein Praktikum. Right now, gerade is what? Right now, abhi. So ich mache gerade ein Praktikum means right now I'm doing an internship. Ich habe mich ein Praktikum beworben. So sich bewerben हमने रिफ्लेक्सिव में किया है, जाके जरूर देखें. So किसी चीज के लिए अप्लाई करना होता है तो we always use that phrase sich bewerben It is reflexive with accusative. Ich habe mich so ein Praktikum beworben means I applied for an internship. I have applied for an internship. Während meines Praktikums habe ich meiner Frau begegnet. So begegnen takes starting. Während means during. It takes genitive. So während meines Praktikums मतलब during my internship I met my wife. habe ich meiner Frau begegnet. Meiner क्यों हो गया? Because begegnen takes starting. Der Gast, die Gäste means guest. Wer empfängt die Gäste? Who is receiving the guests? Empfangen is to receive. Empfängt, conjugation in third person singular. So wer empfängt die Gäste? Einem hungrigen Gast schmeckt alles. ठीक है? So everything tastes good to a hungry guest. Haben Sie Gäste zum Abendessen? ठीक है? You have guests for dinner. Zum Abendessen. Always use this phrase zum Abendessen. Okay? Not other prepositions. Der Gastgeber means host. जैसे एक मेहमान होता है, दूसरा मेजबान होता है. मेजबान के घर मेहमान आते हैं. ठीक है? So this is host. Russland ist Gastgeber der Olympischen Spiele. Means Russia is the host for Olympic Games. Simple. Sie dankte dem Gastgeber für die Party. She thanked. Dankte means past tense में danken का. Sie dankte, she thanked dem Gastgeber. Dem क्यों हो गया? Because danken takes starting. She thanked the host for the party. Der Kellner means waiter. Ich warte auf den Kellner. Warten auf. Okay, Verben plus Präposition and we have already done. You can go and see. Ich warte auf den Kellner means I'm waiting for the waiter. Peter beleidigte den Kellner. So beleidigten. Beleidigen is to insult. ठीक है? beschimpfen. किसी को बेइज्जत करना, किसी को इंसल्ट करना. Peter beleidigte den Kellner means Peter insulted the waiter. Er arbeitet als Kellner in einem Restaurant. ठीक है? मतलब he works as a waiter in a restaurant. Fine. So with this we did so many nouns or especially for A2 level. Thank you so much for your time and patience. See you in the next session. Auf Wiedersehen.